day 2 of Ramzan and our meal prep. So मैंने जो बनाया था list उसके अंदर I needed to have chicken, banana pancakes, bran rice, lemon juice and whole wheat pasta. So अब उन चीज़ों के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है they are all here over here. So this is the Falak organic brown basmati rice. ये whole wheat pasta है bake parlor का. These are some rolled oats. یہ ساری جو چیزیں these are actually for the banana pancakes which is an amazing breakfast. تو یہاں پر ہمارا ایک بریکفسٹ کا ڈش ریڈی, یہاں پر ہمارے پاس 2 ڈنر کے ڈشز ریڈی, لنچ ڈنر جو بھی مطلب whatever you would like to call it, وہ 2 ہمارے ڈشز ریڈی ہو جاتے ہیں. Let's talk about why we are using brown rice. اب مجھے پتہ ہے کہ براؤن رائس جو ہوتے ہیں وہ وائٹ رائس سے زیادہ مشکل سے بنتے ہیں. they're not easy to make. At least that is what I've experienced. کا صرف فائدہ یہ ہوتا ہے that they are fat free. Every rice is gluten free but they have mentioned it. They're cholesterol free, they help reduce weight and they keep your heart healthy. So اگر آپ کو چاول کھانے بہت پسند ہیں, جیسے میری فیملی میں بہت چاول کھائے جاتے ہیں, I personally don't eat a lot of چاول, لیکن they're good for you. So we'd rather have the good alternative over here. So اس لیے میں نے یہ والے پسند. The next thing that we have right here is the whole wheat pasta, اور یہ بیک پارلر کی ہے. As you can see they are low in calories, high in fiber, ideal for a healthy lifestyle. اس کا بھی صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پاستا کھا ہی رہے ہیں, پاستا از ناٹ بیڈ فار یو, لیکن اگر کھا رہے ہیں تو صحیح والا کھا لیں جس میں تھوڑا نیوٹریشن ہی ہو. اینڈ اس کا بھی میں نے یہ 1 کپ نکال کے رکھ دیا ہوا ہے یہاں پہ. So I'm going to be cooking all of these in front of you guys. یہاں پر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ہمارے کوئک اوٹس. رولڈ اوٹس مجھے مل نہیں رہے تھے تو کوئک اوٹس سے ہی گزارا کر لیتے ہیں. سم بیکنگ پاؤڈر, vanilla essence, 3 bananas and the milk of your choice. So this is the entire ingredient list that we need for our for our banana pancakes. So first we start with our brown rice. اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے that these are very hard to cook. مجھ سے تو آج تک کبھی صحیح نہیں ہو پائے ہیں, but I'm taking a chance. Let's see how this goes. ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں it was like this کہ آپ ان کو 2 گھنٹے کے لیے soak کر کے رکھ دیں. So now I'm just going to soak these for 2 hours. مما آپ کو پتہ ہے ان کو ایکچولی 2 گھنٹے کے لیے soak کر کے رکھنا پڑتا ہے یہ براؤن رائس کو. I never knew that. یہ جو Really, as long as you can. So this is the pot right here. اس کے اندر تھوڑا سا پانی ابل رہا ہے. I also put a little olive oil in the bottom تاکہ چپکے نہیں اور جڑ نہ جائے پاستا. And here we have our whole wheat pasta. تھوڑا سا بوائل آتا ہے پانی کے اندر تو پھر میں اس کو ڈالوں گی. ہیلو. سو جنرلی ابھی میرے گھر میں فل ایک ہاؤس فل والا ٹائم ہے اور اس میں اپنے کچن کو کلیم کرنا از سم تھنگ دیٹس امپاسبل. 500 دفعہ سب آ چکے ہیں بٹ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ کہ کسی طرح ویڈیو بن جائے اور سب کچھ ساتھ ساتھ ہوتا رہے, کیونکہ اس کے علاوہ تو نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. ایک دروازہ یہ رہا, ایک دروازہ یہ رہا, کسی بھی ٹائم کوئی بھی آئے گا, بٹ یو گائز ہیو ٹو بی ود می ان دس, کیونکہ جیسے جیسے کر کے بھی آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو گائز واٹ آئی ایم پریپیئرنگ فار دا نیکسٹ 6 days. Now why am I preparing all of these foods ابھی سے؟ I know کہ یہ کویشچن ایک دم سے دماغ میں ٹریگر کرتا ہے. That's just because ہم سب کے پاس روز اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کھانا پکائیں. پھر obviously جو بھی چیز ٹیبل پہ آتی ہے, چاہے وہ اسپرنگ رول ہوں, پکوڑے ہوں, سموسے ہوں, ہم انہیں کھا جاتے ہیں بیکاز ہمارے پاس کوئی ہیلدی آلٹرنیٹیو ہوتا ہی نہیں کسی چیز کا. بھوکے تو رہ نہیں سکتے obviously. تو اس لیے اٹس بیٹر کہ اگر آپ کے پاس آپ کے جو ہیلدی چوائسیز ہیں وہ پڑے ہوئے ہوں تاکہ جب آپ کو بھوک لگے آپ انہیں کو نکال کے کھائیں. سو آئی ایون ہیو ہیلدی اسنیکس لائک almonds and dry fruits الگ الگ قسم کے. I have fruits at home, I have healthy bread at home, تو سب کچھ ہیلدی ہے. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ we are thinking totally about weight loss. نہیں, ایسا سین نہیں ہے. I am thinking about totally eating healthy food. So اب بات یہ کہ اگر میں let's say white bread کھاتی ہوں, so this is a bread. It will fill me up but just for a while. اس میں nutritional values بہت کم ہیں. So if I have brown bread instead, اس کے نیوٹریشنل ویلیوز بہت زیادہ ہیں اور میرے پیٹ میں غذا جائے گی. یو انڈرسٹینڈ, نیوٹریشن جائے گی. سو دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو ریئلی فوکس آن دیز ڈیز. سو لیٹس سی. ابھی پانی میں ابالا آنے لگا ہے رائٹ دیر فار دا پاستا اینڈ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو pour the pasta in it. Time to pour the pasta. Yeah. Oopsie. Yeah.
So अब ये pasta slow speed पे boil होता रहेगा and I will take this off when it's done. This, Aisha, it looks like, what is this? I'm not eating tokh malanga with fruit. No, no, no. Yuck, boo-boo. अच्छा, so सबसे पहले we are going to blend our oats and this is to make oats. Now what we're doing next is we are taking 3 bananas. बहुत छोटू से bananas है, so I think I might need 4. Let's see. So now that I have added 4 bananas to this, ये soak हो रहा है. इसमें मैं हल्का सा stir करूँगी just so that these don't stick to each other. लेकिन ये वैसे ही low heat पे, so this is not going to be a problem for us anyway. Now in this, I'm going to add 3 eggs. 3 eggs. Let's start. Egg number 1. Egg number 2. And egg number 3. Now I'm going to be adding some milk into this. A little bit of baking powder. Now the last thing, which is the most important in my recipe, is this vanilla essence right here. I'm going to take a dhakkan full. You see that? And I'm going to put it in here. So now that this mixture is blended, I'm going to start cooking the pancakes. So now I can see that these are really nicely and fluffily cooked already. ये पक चुके हैं, ठीक है? So it's time to strain them. और इनको strain करते ही मैं ठंडे ठंडे पानी के नीचे इनको रख दूँगी. Now I am straining this under cold water. I am not a cook, so अगर आपको मेरे कोई भी तरीके उल्टे पुल्टे लग रहे हैं, please don't judge because I'm not a cook. I keep this over here. So this is olive oil right here and I'm just going to put a literal dot, like you saw it, right? एक dot डाला है और इस dot को मैं अपनी fingers से अच्छी तरह से इसके ऊपर पूरा लगा दूँगी. So now that we have the batter with us right here, I'm just going to put in a little bit. और मैं छोटू छोटू से बनाऊंगी because they're easier to make and it's less mess. भले ज़्यादा time लगे, I don't mind. These should turn out perfect. You see those bubbles coming in? That's when you know it's time to turn. But I'm not sure, really, because this is some risky business. Very, very risky business. Oh my God, I need 2 चम्मच. Oh yeah! Oh my God, success! Oh my God, this is amazing. Look at it. Itna pyara. It's so super healthy कि you can't even imagine. It has no maida, no atta, no flour, nothing in it. It has oats, it has bananas, and you can top this up with honey. You can have it with maple syrup, and this is the perfect nashta that one could have. Alright, so हमारा जो pasta था, this is now ready. तो अब हम क्या करेंगे that I have this waterproof and airproof container. तो इसके अंदर I am going to save and store this pasta ताकि oopsie ताकि जब जिसको खाना हो they can just have the pasta. And our next dish, which were the pancakes, the healthy ones,
These are also ready. Just look at how many we were able to make out of such less ingredients. अभी थोड़े से गर्म है, जैसे थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो I will put them into zipper seal bags like these. और इनको मैं अपने फ्रीज़र में स्टोर कर दूंगी and they can last for up to 1 month. So we can keep eating them till we want to, and once they're done, they're done. In the deep freezer for only 1 month. Only 1 month. Only 1 month. After that, we believe that can serious germs again. So fresh is always much better. I'm making tea and going. I just had a taste. They're so nice. If you want to add more bananas to it to just increase the sweetness, you can do it. But yummy, man. So nice. उठना होगा, कभी देर से उठना होगा. रोज़ों में देर से उठने का ज़रा मज़ा आता है. अब ये जो pancakes हैं, these have been stored nicely right here, ठीक है, in a zipper lock bag, और इसको मैं अब freeze कर दूंगी, and the pasta will go into the fridge. Goes here into the fridge, safe and sound. So this rice has been sitting here for more than 2 hours now. And it's definitely gotten softer, so I think this is the trick to making perfect brown rice. और यहाँ पर मैं पानी उबालने के लिए पानी भर चुकी हूँ देगची के अंदर, and I'm just going to keep this, हाई बहुत ज़्यादा होगा. I'm just going to keep this on the stove. आज पहला रोज़ा था तो मैं इतनी ड्रेन हो गई हूँ. I actually started doing this meal prep वाला सारा काम around 9 o'clock. और अभी रात के 12-15 हो रहे हैं. सो आई हैव लिटरली स्पेंट द इंटायर टाइम बिफोर सहरी एंड आफ्टर इफ्तार डूइंग ऑल ऑफ दिस. सो डू नो कि आपका एक अच्छा खासा चंक जाएगा एक दिन का टू प्रिपेयर ऑल ऑफ दिस. मगर इसका फ़ायदा ये है ना कि सारा जो खाना अब आगे के दिनों में चाहिए होगा वो सब पका हुआ होगा. सो आसानी यहाँ पे आती है. मुझे कोई चिकन की डिश बनानी है, चिकन निकाली मैंने, आई पॉप्ड इट इन द एयर फ्रायर, साथ में मेरे चावल बने हुए होंगे. बिकॉज ये कितना लंबा प्रोसेस है, रोज़ तो कोई नहीं कर सकता, एटलीस्ट मैं नहीं कर सकती. कुडूस टू द वुमेन हु डू इट. तो निकाले, मिक्स किए, फूड रेडी, राइट, सिंपल. तो इसलिए ये करना इतना ज़रूरी है फॉर मी राइट नाउ. तो भले एक दिन मेरी थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा चाह रही है, इट्स ओके, इट विल बी वर्थ इट. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट इवन केयर अबाउट द एनर्जी. मेरी वीडियो नहीं अपलोड हो रही. अभी 12 बजे से ऊपर हो गए एंड आई एम ट्राइंग टू अपलोड दिस वीडियो सिंस 10 o'clock. और ये मेरी वीडियो नहीं अपलोड कर रहा है यूट्यूब. वाई? सो आई कैंसल्ड इट एंड आई री अपलोडेड इट. और अभी भी वो 10% पे बैठी हुई है और 12 बजे से ऊपर हो चुका है. मेरा दिमाग घूम रहा है. दिस इज़ हाउ लाइफ इन द किचन विद फातिमा लुक्स. देयर इज अ डेड एंड टायर्ड फातिमा. मतलब आज मुझे मेरे ताऊ की भी आवाज़ आई. ताऊ बोल रहे थे वैसे तो कुछ खाती नहीं है, कुछ बनाती नहीं है, और जब बनाती है तो इतना ज़्यादा बनाती है. So yes, that is life in my kitchen today. मुझे तो लग रहा है मैं कुछ खाने की भी हिम्मत में नहीं रहूँगी by the time सहरी time comes, because I'll be so done. I'll be like अब मुझे खाना देखना ही नहीं, खाना ही नहीं. दफ़ो प्लीज़. मम्मा पहले ही शुरू किया था, उसको डालना पड़ता है ना इसके अंदर काफ़ी देर के बाद. नमक डाल दिया. आई एम जस्ट वेटिंग कि वो बाला आ जाए ना, देन आई विल पुट दैट. क्या करूँ मैं इसको, पता है इतनी देर के लिए वो भी तो करना पड़ रहा था ना, सोक. मम्मा आपको पता है मुझे दिन में ना आपको नहीं देना चाह रही थी ना. इट्स ओके, आई डिडंट. आपने वो चिकन कर दी थी ना, चिकन आपने जो वो चिकन जो आपने कर दी ना, दैट इज़ लाइक वर्थ 6 days ऑफ वर्क. आपको पता भी नहीं है. नहीं, कुक तो मैं खुद कर लूँगी जब बनानी होगी ना. My brain is literally about to explode. मैं पिछले 3 घंटे से कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो अपलोड हो जाए और 20% से आगे ही नहीं बढ़ रही. सो नाउ आई जस्ट गिवन अप. मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है बिकॉज आई वांटेड टू अपलोड इट ऑन टाइम. दिस
एंड अब आई एम ट्राइंग कि मैं अपने लैपटॉप में इसको डाउनलोड करके किसी तरह से लैपटॉप से देखूँगी. अगर लैपटॉप से जल्दी अपलोड हो जाती है तो गुड. आज सहरी से पहले अपलोड हो जाएगी. बट नाउ माई हेड इज़ लिटरली हर्टिंग लाइक क्रेजी बिकॉज I've been trying too hard to make this happen and it's just not happening. So I've just popped in a chicken tikka for some yummy chicken type ki sehri today. And finally, the brown rice are coming to an end. जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे तो लिटरली ऐसा लग रहा है सदियों से मैं ये बेचारी बना रही हूँ, पाए पका रही हूँ कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है. अब ये तो पक्की बात है भाई, मैं कल कहीं नहीं जा रही, मैं कुछ नहीं कर रही, मैंने सिर्फ सोना है. आई एम सो टायर्ड, यू हैव नो आइडिया. Literally. Just quickly take these out and put these in this storage box and then place this in my fridge. Hello, now it's sehri time. ये सब बनाते and I already had some of this salad right here. तो अब मैं इसी को use करूँगी and because I have been making that rice for so long, तो मैं सोच नहीं सकती कि मैं अब कुछ और खाऊं. So I'm just going to make a nice rice bowl and that's what I'm going to have right now. क्योंकि अब इतनी कोई crazy भूख भी लग गई है मुझे that I'm starving. So let me show you how I'm going to do it. So my chicken is already in the air fryer. वो वहाँ पे बन रही है. And I have this salad left over from dinner tonight. Not my dinner, घर वालों का dinner. So अभी मैं इन सब चीज़ों को chop करूँगी. Wait and watch. Right now that I'm finally done with everything for the next 6 days, and here is my sehri. I just cannot wait to have it because it smells so good. अब बिल्कुल गर्मा गर्म fresh है अभी. So I'm just going to have my sehri and then I'm off for the night. Bye bye. So why don't you just yell at them or fire them? I would love to, but I can't. Hello, अब मेरा मुंह थोड़ा सा कम सूजा हुआ है because I'm finally all wide awake now. And yes, you will always see me repeating my night suits and my clothes because let's be real, this is how I am. अगर आप मेरे best friend होते, अगर आप मेरे एक real life friend होते, आपको पता होता that this is how I am in reality. तो अभी हो रहे हैं 4:15 और भूखे मुझे ऐसी लग रही है कि जैसे, और ये क्या जुल्म है. Why is this here on the table? बिरयानी? Don't do this बिरयानी. Oh my God. तो मैंने सोचा कि अब जो मुझे इतनी भूखे लग रही है तो मैं जा कर ना अपना इफ्तार प्रेप पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं वो काम करने लग जाती हूँ ना ऑटोमेटिकली भूख कम हो जाती है. सो आई जस्ट डू दैट. मेरा पर्सनली एक छोटा सा गोल ये होता है कि मैं अगर अंडे खा रही हूँ दिन में तो 2 से ज़्यादा नहीं खाऊँ. इसलिए आई ट्राई टू डिवाइड इट कि मैं अंडे कब खाऊं. अब एज यू नो मैंने सहरी में तो एक राइस बोल खाया था बहुत मज़े का. और उसमें प्रोटीन का सोर्स वाज द चिकन. तो अब आई कैन ऐड एग्स टू माई इफ्तार. तो आई एम प्लानिंग ऑन मेकिंग अ वेरी वेरी यमी सैलेड, अ वेरी वेरी यमी वन होपफुली. तो उसके लिए अभी प्रेप्स तैयार करना. प्रेप स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग सम एग्स. और ये मेरे एग्स यहाँ पर निकले हुए हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू get these on boil. All right, so first of all I'm going to take out these 2 cucumbers, Pakra Bubu, and 1 shimla mirchi like this one, Pakra Bubu. Good. Then I'm going to take, oops nahi, ye wala nahi,
I'm going to take one apple. Actually, 2 apples. Why not? These 2 apples. Pakdo bubu. And then we have these lettuce. This lettuce, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं. तो cabbage लिखा हुआ है नहीं cabbage. This is lettuce. I'll show it to you guys what it looks like. पानी बना रही हो? Lemons बाहर टेबल पे पड़े हैं. I think 2 are enough वैसे. ये छोटे हैं ना. Right here is just squeezing all the lemon juice from the squeezer. हाय बबू गिराना नहीं, क्योंकि अब ये हमारी एक बहुत ही फ्रेश ड्रिंक जो बनती है ना, वो ये होती है लीमू पानी. Lots and lots of ठंडा लीमू पानी, natural वाला. Yes बबू, go ahead with it. You can do it. I think हाथ वाला is easier. No, I think this is fast. वो पूरा भरा हुआ है अभी तक. No, खत्म है. नहीं ना, देखो भरा हुआ है अभी तक. खत्म है. कहाँ है खत्म? मैं निकालूं? नहीं है इसमें. दिखाओ. नहीं है. तो कैसे निकल रहा है? ये देखो ना, Please ना. निकले ही जा रहा है. हिम्मत निकालते हैं, हिम्मत. शेख हो तुम, शेख. Learn how to get a whole glass out of this. No. Yes. Okay. Bubu, shut up. Thank you. For today's salad, what we're using are... जी doctor. कीमत ना बताना जो डाइट की तारीफ. Okay, नहीं बता रही. और भी किसी करीबी को ना बताना ताकि उन्हें ना बता. मेरी वीडियो में आके ताऊ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और कह रहे करीबियों को मत बताना. बाद में आयशा प्लीज दफा हो यहाँ से. तुम्हें क्यों जानना है? वो क्या तुम चापलूसी है? For 1 month. For 1 month. It's good ना. अच्छा बबू जाओ यहाँ से, पागल औरत. अच्छा, so for today's salad what we आपने already देख लिया है सब, but I'll still tell you are these 2 cucumbers. ठीक है, साथ में we have these 2 apples. आप इसकी जगह कोई भी fruit use कर सकते हैं, it's up to you, but ज़्यादा liquidy fruit ना हो तो it's better. Then we have 1 onion, 1 capsicum, shimla mirch, and then you can use any lettuce of your choice. I really like this Chinese lettuce. I mean that's what they call it in Imtiaz, क्योंकि बहुत watery है ये. It's really nice and juicy. मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है. You can use any lettuce, cabbage, any sort of green for this salad. So the reason why I'm adding these apples into it is because salads खाना वैसे ही कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और सिर्फ ऐसे घास फूस चबाना is no fun, trust me. तो कभी कभी थोड़ा सा एक मज़ेदार सा फैक्टर होना ज़रूरी है इन सैलड्स में. Alright, so now the capsicum is also ready and so are the onions. So I'm just going to put the onions here as well. ऐसे. And then the capsicums. कितना मज़े का ग्रीन सा बन रहा है ना. So nice and healthy. देख के ही मज़ा आ रहा है. इसको बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, वैसे खाने में भी आता है मगर बनाने में भी आता है. So that's what it looks like. Full of colors. Nice. हाँ, ये तो एंड में करूँगी मैं. Alright, now this is ready. I'm just putting some lemon juice into this. So इसके अंदर I'm going to put 2 of my most favorite sauces. एक teriyaki sauce है, amazing. There's a little bit of teriyaki sauce. Sweet Thai chili sauce. Last में I'm going to add the soya sauce. वैसे तो ये soy sauce होता है, but okay. और then turn this. So I just came out for a second
to take a thumbnail photo for this, obviously. जो भी आप thumbnail पे देखेंगे, because this looks so nice and so delicious. Oh my god, it even smells so nice. Allah, what am I doing to myself? वो भी खुद ही. I'm just going to put this into the fridge now. When I was making the salad, Taj Bhai just told me that this came in for me. I don't know what this is. It's from Little Eating House and it's a tiffin. And it's actually a lunch box. It's a proper tiffin. Let's open this up and see kiske andar kya hai. Okay, wow. This is such a cute setting. That's box number 1. This is... Oh my god, so cute. Box number 2. Okay, wow, ये तो पूरा... Oh my god. Check this out, bhai. ये तो पूरा tiffin आ गया है मेरे पास. This is so super cute. Oh my god. Let me see what I have in this tiffin right here. Tikka. Oh my god. I love it. A healthy option. Thank god. What is this? This is the first one. And this has these really nice, oh my god, these have these chicken and mashed egg sandwiches with bananas as well. Wow, bhai, full health conscious cheese aayi hai yaar mere paas. I think you guys got the word out, badi zor se. Oh my god, there's more of these. Okay, wow, this looks amazing, honestly. I guess this is sehri, this is iftari, and this is dinner. Wow, you guys are doing an awesome job यार. इतना cute tiffin था यार, ये पहले आ जाना चाहिए था. अब तो मैंने सारा बना लिया, but thank God I only made the salad, which means that I still have time to, you know, make place for all of this. तो ये साथ वालों के घर हमेशा काम हो रहा होता है. Can't ever stand here and shoot something. खैर, I am standing here feeling very bad about myself. You know why? I'll show you. This is what my drawing room looks like, and I have only been able to figure out like 10% of it. Only 10%. Time ही नहीं मिल पा रहा होता. So now the table is set for the 4 of us. बाकी चीज़ें अब यहाँ पर मैं लाके set करती हूँ. So this is what's in my plate right now, and that is the watermelon. Hi Boo Boo. She's also having almost the same stuff. And there we have our dates. Tao's showing us the dates. Then there's the salad and the Dadi made dahi bade that are now finished. Thank you Tao, they're good. And now, oh yes, this is the main thing. Doodh tukh malanga right here जो दादी ने बनाया है. So that is it for today's vlog. आज बहुत ही कोई lazy सा day था because आज मैंने off भी लिया हुआ था, and I just wanted to relax in my PJs the whole day and just chill, spend time in ibadat and just relax, you know. So आज का दिन पूरा ऐसा ही गुजरा है. I will catch you guys in tomorrow's vlog.